वेलकम बैक दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका पांडे में आपका वेलकम है। सो टुडे आई विल डिस्कस with the next module which is the third module of organization behavior. आप इसके पहले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने मॉड्यूल 1 का भी नोट्स अपलोड किया है, लेक्चर वीडियो अपलोड किया है, मॉड्यूल 2 का भी अपलोड किया है। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल 3rd. So in module 3rd, I will cover importance of psychological process of motivation, silent motivational tools, need theory, content theory, and process theory. So I'm going to cover these topic in this particular module. So let's start with the first topic, which is the concept of motivation. So motivation, this is not a new word for you all. I think it is a very common word for everyone, and we all are aware about this word. So, motivation means motive plus action. When two words combine together, it becomes a motivation. Okay, so the word motivation has been derived from the Latin word mover, जिसका कि मतलब होता है to move करना. Motivation can be referred as a combination of motive and action. As I said, ये motive and action का combination है. So motivation is an action word that influence every aspect of our daily life. So motivation एक ऐसा term है जो कहीं ना कहीं हमें influence करता है हर aspects में हमारे daily life में. So it is a fundamental of success and individual attainment. So motivation is a personal and internal feeling. It is a personal and internal feeling. So this feeling arise from needs and wants. ये मोटिवेशन वर्ड आया कहाँ से, मतलब इसका जरूरत क्यों पड़ा लोगों को, वाई वी नीड दिस वर्ड मोटिवेशन. सो दिस फीलिंग, इसका फीलिंग जो है ना अराइज किया आपका नीड एंड वांट से. सो मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. वी कैन से ये कभी खत्म नहीं होने वाला. हमारा एक नीड खत्म होता है, एक वांट खत्म होता है, हम दूसरे नीड एंड वांट की तरफ मूव कर जाते हैं. तो मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा टर्म है जो हमें हमेशा मूव ऑन करने के लिए बताता है. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, so moving towards the definition of motivation. So motivation is like a stimulating and inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity. तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को स्टिमुलेट करता है, इंस्पायर करता है एंड इंड्यूस करता है सो दैट कि पीपल विल टेक अ एक्शन. सो साइकोलॉजिकल, इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म. ठीक है, हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टर्म है. इट कैन नॉट बी फोर्स. ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. इफ वी हैव अ नीड वी कैन मूव. ऑटोमेटिक हम मूव कर जाएंगे अगर हमको जरूरत है और हमको ऐसा लगता है, इफ आई फील कि आई गेट समथिंग, if I'll do this, ठीक है, so I will automatically move towards achieving that particular thing. Okay, so it is a willingness to do the work. तो ये कहीं ना कहीं काम करने के लिए willingness को willingness लोगों को देता है. So Joy Colley defined motivation is a process when by needs instigate behavior directs towards the goal that can satisfy those needs. So we have more to definition. You can remember. Hope so. The term is clear to all of you. Motivation term is clear to all of you. Now moving towards the next slide, which is a types of motivation. So let's talk about the types of motivation. So we have a different types of motivation are frequently described as being either extrinsic or intrinsic. तो हमारे पास दो तरह का मोटिवेशन है. एक तो आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन आ गया, दूसरा इंट्रेंसिक. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रेंसिक, सो इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, एक्सट्रेंसिक मतलब हम अगर काम करेंगे, मूव ऑन करेंगे, कुछ करेंगे तो उसके लिए हमको रिवॉर्ड मिलेगा. आई एम गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड, आई एम गोइंग टू गेट अ ट्रॉफी, आई एम गोइंग टू गेट अ मनी, आई एम गोइंग टू गेट अ सोशल रिकॉग्निशन और प्रेस. अगर मैं पढ़ती हूँ, एग्जाम देती हूँ तो मैं पास करूंगा. आई विल गेट अ मार्क. दिस इज द मोटिवेशन बिकॉज आई एम मूविंग टुवर्ड्स टू गिव माय एग्जाम. ओके, I will get money once I'll do this task. I will get a money. So money is the motivational force. So कहीं ना कहीं extrinsic motivation जो है ना,
वो बाहर से आता है, हमको कुछ मिलेगा तो हम काम करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, ठीक है। वी नीड अ मनी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ जॉब, ठीक है। Now, the second type of motivation is the intrinsic motivation. So, intrinsic motivation क्या होता है? So, are those that arise from within the individual, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसा टर्म है जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के अंदर से आता है। हम अपने इनिशियल अर्ज को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। हमको कुछ आई लाइक म्यूजिक, ओके, तो मैं गाना गाता हूँ, ठीक है। मैं गाना गाती हूँ, मैं अकेले में गाना सुनती हूँ, दैट इज माई अर्ज। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? हमको ऐसा नहीं कि गाना गाने से मुझे आई एम गोइंग टू गेट अ मनी, आई एम गोइंग टू गेट अ ट्रॉफी, बट स्टिल आई एम playing a music because it comes inside from me. So somebody is solving the crossword puzzles. So only because of their सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और अपना अंदर का जो आवाज है ना, तो ये मैं अपने चॉइस से कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एल्स, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस क्रॉसवर्ड मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई अवार्ड या मनी या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, लेकिन बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। So this is the types of motivation. Okay. Now moving towards the next topic, which is a psychological process of motivation. So yes, exactly, it is a psychological process, psychological that is inside, that is from the mind, okay, जो कि अंदर से आता है। So the literal meaning of the motivation is the desire to do things. तो इसका कहीं ना कहीं लिटरल मीनिंग है कि कोई हमको डिजायर है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। सो इट इज अ इंटरनल स्टेट दैट इज गोल ओरिएंटेड। ये इंटरनल स्टेट है, गोल ओरिएंटेड है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनर फोर्स है जो आपको ड्राइव करता है क्यू टू डू समथिंग, ठीक है। इट इज अ इनर फोर्स, अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हम अगर ये काम करते हैं तो आई विल गेट दैट थिंग। So if I'll do my study, if I'll do my study in a proper way, I'll get a good job, and that will help to make my career better. So some individuals are highly motivated and they have a energy, direction or the drive. तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड डायरेक्शन टू ड्राइव। तो मोटिवेशन इज द एरिया ऑफ साइकोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन साइकोलॉजी का एरिया, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ओबी इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। Why it is a multidisciplinary approach? Because it has, we have taken a different stream here, okay, different stream का different domain हमने लिया। So motivation कहीं ना कहीं psychological process है, because it comes from the mind. We can take an example of an employee. तो कहीं ना कहीं इट इज a responsibility of boss or the owner to motivate the employees to increase the performance and productivity. We are talking about the performance and productivity in the organization. हम performance और productivity की बात करते हैं, ठीक है। But how this performance is going to be increased? How the efficiency and effectiveness of the employee is going to increase? So if you want to increase that, you have to give a motivation to your employee. आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देना पड़ेगा। मोटिवेशन किस चीज का? कि if you will perform better, you will hike in your salary. Hike in your salary, you are going to get a recognition, you are going to get a promotion. So promotion, recognition, status, salary enhancement, these all are the tool which help to motivate the individual towards achieving the organizational goal. So, if an individual is working in the organization, he has at the same time he has a individual goal also, ठीक है। अपना individual goal है ना, अपना career goal है, उसको पाने के लिए ही वो काम कर रहा है। So the motivation given to students by the teacher pave way to an improved or better learning process in them. तो अगर हम एक टीचर की बात करें तो किस तरह से मोटिवेशन देती है या मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को? बाय गिविंग देम गुड मार्क्स एंड बाय अप्रिशिएटिंग देम, बाय giving them recognition in the class. So these are the term tools which help to motivate the student in the classroom. So yes, exactly, it is a psychological process of psychological process. Now, moving towards the next, which is the importance of psychological process of motivation. So, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारे निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिविटी में बदलने में।
ठीक है। हमको पता है, आई एम नोइंग कि अगर मैं ये काम करूंगी तो आई विल एनहांस माय सैलरी। ओके। सो निगेटिविटी जो थी कि नहीं सैलरी नहीं बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेंगे, तो ओनली बिकॉज ऑफ getting the enhancement I'm doing a task. So it is a kind of more positive attitude. So motivation, the second one is a motivation improve performance level of employees. Definitely, it is very important to enhance the efficiency and effectiveness of the individual. Efficiency, effectiveness को बढ़ाने के लिए we need the term motivation. So it helps in achieving an organizational goal. तो इस ये कहीं ना कहीं only because of motivation people are doing things. उनको पता है कि हम अपने organizational goal को हासिल कर सकेंगे. So motivation creates a supportive work environment. Motivation क्या करता है? Supportive work environment को create करता है. Because everybody is knowing कि I'm going to get this thing, I'm going to this. तो कहीं ना कहीं आपके वर्क एनवायरनमेंट को सपोर्टिव और सपोर्टिव बनाता है. तो मोटिवेट नेक्स्ट पॉइंट इज द मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंज. तो ये चेंज को भी इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. कैसे इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? सपोज if you want a new technique और द न्यू मशीन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नया टेक्निक, नया मशीन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. सो समटाइम्स क्या होता है ना कि पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज. हमको कि नया चीज सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. बट इफ देयर इज अ मोटिवेशन that once you learn the new software you will get a enhancement in your salary, you are going to get a new position, you are going to get a promotion. So these are the terms which help to improve the performance and help to the manager to introduce change. The last point in this particular topic is reduction in employee turnover. Employee turnover, we are talking about the employee turnover. The turnover is the rate at which the employee is leaving the organization. So if the individual is going to get a career advancement, if he or she is going to get a fulfill personal goal with the organizational goal, why the employee is going to leave the organization? Nobody wants to leave the organization if he or she is going to get a, everything what he wanted. उसकी सैलरी एनहांसमेंट मिल रहा, प्रमोशन मिल रहा, तो हम क्यों छोड़ेंगे? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की गोल को भी ध्यान में रखेगा तो the people are not going to leave the job and ultimately the turnover rate is going to be decrease. देखिए डिटेल नोट्स भी दिया है हमारे मेरे मेरे पीपीटी में. सो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं. मोटिवेशन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय, हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, motivation creates a supportive work environment, motivation helps to manager to introduce the change, reduction in employee turnover. So these are the points which you can get from the ppt. Now the next topic is a theory. अब हम थ्योरी की बात करते हैं, मोटिवेशनल थ्योरी. So different researcher has been given a different theory on motivation. So basically there are two type of theory. The first one is the content theory or need theory and the second one is the process theory. तो दो तरह का थ्योरी हमारा, एक तो कंटेंट थ्योरी है और दूसरा है आपका प्रोसेस थ्योरी. तो कंटेंट थ्योरी इज आल्सो नोन एज अ नीड थ्योरी. तो नीड थ्योरी भी कहा जाता है. So under which we have a Abraham Maslow need hierarchical theory. Next we have Hirschberg two-factor theory. Next we have Douglas McGregor theory X and theory Y. Next one is Alderfer's ERG theory. And the last one is a David C. McClelland's three need theory. So these are the content theory and need theory of motivation. So why it is called a need theory?
all need theories focus on specific needs people want to satisfy. Actually, these are going to cover the need of the human. Okay? Need how the people are going to satisfy their need. There are several theories that explain motivation as a result of these things. So इस need को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे theories हैं. So the underlying concept in the is the belief that and unsatisfied needs create tension and a state of disequilibrium. एग्जैक्टली जब हमारा नीड जो है ना वो अनसेटिस्फाई हो जाता है, अनसेटिस्फाइड है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग इन अ टेंशन, और टेंशन जब होगा तो ये कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर देगा. So to restore balance, a goal is identify. ठीक है, इस बैलेंस को स्टोर करने के लिए गोल आइडेंटिफाई है दैट विल सेटिस्फाई द नीड एंड द बिहेवियर पाथवे टू दिस गोल इज सेलेक्टेड. ऑल बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय अनसेटिस्फाइड नीड. हर बिहेवियर जो है वो कैसे मोटिवेटेड होगा, अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करने के लिए. पीपल विल बी बेटर मोटिवेटेड इफ देयर वर्क एक्सपीरियंस सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट. तो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें, क्यों? क्योंकि अगर उनका वर्क एक्सपीरियंस जो है ना उनको सेटिस्फाई करेगा, उनकी नीड एंड वांट को पूरा करेगा, सो दैट पीपल आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड. So need theory distinguishes between primary needs such as food, sleep, and other biological needs, and the secondary psychological needs that are learned and vary by culture and by individual. So next we have a very important theory. So Abraham Maslow's need hierarchical theory, which is a very important theory for your semester, for your study, and this is common to all of you. Everybody nowadays, everybody should know the Abraham Maslow need hierarchical theory. So it is based on the need theory and the content theory. So, Abraham Maslow postulates that a person will be motivated when all his needs are fulfilled. Abraham Maslow ने कहा कोई भी ह्यूमन तभी खुश होगा, सेटिस्फाई होगा जब उसका सारा नीड फुलफिल हो जाएगा. People do not work for security or money, but they work to contribute and to use their skills. लोग सिर्फ मनी और सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करते, बल्कि कि वो खुद का जो है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं एंड वेयर दे वांट टू यूज देयर स्किल्स. So he demonstrated this by creating a pyramid to show how people are motivated and mentioned that one cannot be sent to the next level unless lower level needs are fulfilled. So इस चीज को बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैस्लो ने एक पिरामिड का डायग्राम दिया जिसमें उसने डिफरेंट स्टेजेस बताए ऑफ ह्यूमन लाइफ. फॉर ह्यूमन लाइफ देयर इज अ 5 स्टेज. तो हर एक स्टेज जैसे ही पूरा होगा तभी वो आगे की तरफ मूव करेगा. So it goes from the downward to topward. ठीक है, डाउनवर्ड से ऊपर चला जाएगा. The lowest level needs in the pyramid are basic needs, and unless these lower level needs are satisfied, people do not look at working towards satisfying the upper level. जब तक कि मेरा नीचे का नीड पूरा नहीं होता है ना, हम आगे की नीड को पूरा करने के लिए समय नहीं दे पाएंगे. And upper level need is not going to be satisfied. So you can see the diagram here. So it is a pyramid structure. So under which we have 5 different stages. So people want to fulfill all these needs. एक need जैसे ही पूरा हो जाता है, we have to start with the lower to or bottom to upward. Okay. So अगर हम बात करते हैं, so there is a 5 need of human being. The first one is a psychological process. The second one is a safety, security. The third one is a love and belongingness. The fourth one is a self-esteem or esteem. And the last one is a self-actualization. So let's discuss one by one to each topic. The first is a psychological need. Psychological need क्या होता है? What is psychological need? The basic need. Sorry, it's not a psychological, it is physiological. I have used the psychological in place of physiological. Please correct it. Physiological needs, which are the basic need of any individual. ठीक है?
Physiological, that means you have to fulfill your all physical need, like roti kapda मकान, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम कुछ और सोच ही नहीं सकते. If we do not have a sufficient roti kapda मकान, we can't think outside this. ठीक है, हम अभी सिर्फ रोटी दाल का जुगाड़ करने में सोच रहे हैं, हम और कुछ नहीं सोच रहे हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा एक फाइनल ईयर स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ही और शी नीड्स अ जॉब, whether it is located in outside your state or very far away from a state, or whether it is located in your hometown. ये आपको जब फिजियोलॉजिकल नीड जो है, हमको अपने रोटी कपड़ा का जुगाड़ करना, तो बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, पासिंग बैच स्टूडेंट, ही वांट अ जॉब ओनली, जिससे उसके रोटी कपड़े का जुगाड़ हो सके. नेक्स्ट वी हैव अ सेफ्टी नीड. तो सेफ्टी नीड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट सेफ्टी फ्रॉम थ्रेट, डिप्रेवेशन एंड अदर डेंजरस. तो हमको सेफ्टी चाहिए, किससे चाहिए? किसी भी डेंजरस सिचुएशन से, बीमारी से, या किसी ना किसी थ्रेट से. वी वांट अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. So for this, the passing year batch student or the final year student, once he or she get a job, now he want a safety. That means he want to do a social, he want to do a insurance, and he's going to take a health plan to cover up their disease or their any problem. तो फर्स्ट हमको क्या चाहिए कि जॉब चाहिए, दूसरा सिक्योरिटी चाहिए जॉब के लिए को लेकर के, कि मेरा जॉब जो है सिक्योर रहे. द थर्ड नीड इज द सोशल और द बिलोंगिंगनेस एंड द लव नीड, विच इज अ वेरी इंसेंशियल फॉर द ह्यूमन. ठीक है, खाना का जुगाड़ हो गया, सेफ्टी मिल गया, जॉब से इस जगह पे मिल गया. नाउ आई वांट अ लव एंड बिलोंगिंगनेस. आई वांट इट that people will affiliate me, हमको अपना समझे, association समझे, friendship. I want to create a friendship. If I'm working in the XYZ institute and the organization, I want to make a friend there also for fulfilling our social needs. Okay, man is the social animal, and definitely उसको social affiliation चाहिए, friendship चाहिए, दोस्ती यारी चाहिए. नेक्स्ट, जैसे सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव का पूरा होता है, मूविंग टूवर्ड द सेल्फ स्टीम नीड. सेल्फ स्टीम नीड is the need for respect and the recognition. Once my love belongings needs cover up, I will moving towards the self esteem, जहाँ हमको अपनी recognition चाहिए. People will recognize me, people will respect me. This is the right which the individual पीपल वांट. रिस्पेक्ट हो गया आपका, और रिकॉग्निशन. लास्ट नीड, जैसे ही हमारा सेल्फ स्टीम नीड पूरा होता है ना, हम वहाँ मूव करते हैं टुवर्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. So it is a phase where you are going to get everything. When you are in the position when you get everything as per your potentiality. अपने potentiality के according हमको अगर हर कुछ मिल जाएगा ना, सब कुछ मिल गया, that means I am going at a self actualization phase. So this is the 5 stages of Maslow need hierarchical theory. एक नीड पूरा होता है तो हम दूसरे नीड को फुलफिल करने में लग जाते हैं. This is all about this theory. We have the next theory, which is a Hertzberg two-factor theory. So Hertzberg has classified the need into two broad categories. तो इन्होंने ह्यूमन नीड को क्लासिफाई कितनी कैटेगरी में किया? दो ब्रॉड कैटेगरी में. एक तो हाइजीन फैक्टर एंड दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर. हाइजीन फैक्टर है जो कि satisfier है, and the motivating factor which is not satisfier. The poor hygiene factor may destroy motivation, but improving them under most circumstances will not improve team motivation. तो पुअर, अगर हाइजीन फैक्टर पुअर है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय क्यों करेगा इन्वायरमेंट को, एंड द पीपल विल नॉट इम्प्रूव टीम मोटिवेशन भी नहीं रहेगा. सो हाइजीन फैक्टर हमेशा जो है वो गुड होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए. हाइजीन फैक्टर्स ओनली आर नॉट सफिशिएंट टू मोटिवेट पीपल. हाइजीन फैक्टर केवल सफिशिएंट नहीं है एक इंसान को मोटिवेट करने, बट वी नीड अ मोटिवेटर फैक्टर ऑल्सो. वी नीड मोटिवेटर फैक्टर्स टू
motivate. So you can see the picture. The right left side is the influenced by hygiene factor, which is dissatisfier, जो कि dissatisfier hygiene factor dissatisfier है, and improving motivator factors increase job satisfaction increase करता है, and the last one is influenced by motivator families satisfier. Okay. So these are the terms. If we are talking about the hygiene factor में क्या कहा जाता है? वर्किंग कंडीशन आ गया, कोर वर्कर रिलेशन हो गया, पॉलिसी हो गया, रूल्स हो गया, सुपीरियर क्वालिटी हो गया. So these are the term which comes under hygiene factor. वर्किंग कंडीशन कैसा है, को वर्कर के रिलेशन कैसा है, पॉलिसीज कैसा है, रूल्स कैसा है. And at the same time, we are talking about the motivator factors. So motivator factors are achievement, recognition, responsibility, work itself, personal growth, uh, work itself is the dissatisfier. So अगर ये सारी चीजें मुझे नहीं मिल रही ना, तो हम जॉब पे dissatisfied होंगे. Anyways, I am going to be dissatisfied. Okay. So this is all about the Hirschberg two factors. Principles. Next theory we have McGregor theory X and theory Y. So McGregor has given explained all about X and Y theory in his book, The Human Side of Enterprise, and they refer to two styles of management, authoritarian and participative. So इन्होंने अपने बुक में इस मैनेजमेंट थ्योरी को दिया था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को दिया था. थ्योरी एक्स क्या होता है, तो मैनेजर जो लोग मैनेजर accept this theory, believe that if you feel that your team member dislike their work, have little motivation, need to be watched every minute, and are incapable of being accumulated to their work, avoid responsibility and avoid work whether possible, then you are likely to be authoritarian style of management. According to McGregor, this approach is a very hands-on and usually involves micro coming people to work that it done properly. तो थ्योरी एक्स बोलता है ना कि ऑथोराइटेरियन रूल फॉलो करना, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल, जैसे जो भी मैनेजर बोल रहा है यू नीड टू फॉलो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर इनपुट देयर. The second one is the theory by. As just opposite, theory by is all about that if people are willing to work without supervision, take a pride in their work. So theory by में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को फ्री छोड़ दिया जाता है, काम दे दिया जाए, फ्री छोड़ दिया. You are not going to keep a mind on the employee. तो अगर अपने हिसाब से थोड़ा सो भी लेता है तो उसको फ्रेश होगा, fresh रहेगा. So theory Y is all about participative approach, where you are going to take a decision, or where you can discuss about anything when you are going to take the action. This is all about theory X and theory Y. We have discussed in this particular topic. Next topic we have Aldous ERG theory. So CP Aldous was the American psychologist who has given or developed Maslow hierarchy of need into a theory of his own. तो मैस्लो का ही देखा देखी इन्होंने थ्योरी दिया है, और मैस्लो के पास स्टेज को इन्होंने कम करके 3 स्टेज में डिफाइन कर दिया. ईआरजी. ईआरजी क्या होता है? ईआरजी इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. So he has given a existence theory जो कि रहेगा ही रहेगा, like physiological need जो मैंने कहा ना, which is a existence need, concern our basic material requirement for living. जो basic material है ना लाइफ जीने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं existence need, जो रहना ही रहेगा, उसके बाद बिना तो we are not going to think about the life. नेक्स्ट वन इज द रिलेटेडनेस नीड्स. रिलेटेडनेस नीड का मतलब क्या हो गया? हैव टू डू विद द इम्प्रूव मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करते हैं. ये मैस्लो का जो आपका सेकेंड और थर्ड था ना, वो आ जाता है रिलेटेडनेस में. So next is a growth theory. Growth theory describe our intrinsic desire for personal development. Growth theory से जहाँ मेरा intrinsic desire है अपने growth को हासिल करने.
तो सेल्फ स्टीम का कुछ पार्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कुछ पेज इस ग्रोथ नीड में आपका आएगा। ग्रोथ नीड मतलब ऑल द फर्स्ट all the first is of the opinion that when a certain category of need is not being met, people will redouble their effort to fulfill need in the lower category. तो अगर लोअर लेवल में एक बार आप अपने नीड को पूरा नहीं कर पाए तो इसमें कुछ ना कहीं सेल्फ स्टीम का कुछ पार्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पार्ट आता है ग्रोथ थ्योरी में। So this is all about my lecture notes on module 1, module 3 of motivation. Please try to learn all these things, and I'm going to now. This is the last topic. Today we have discussed a lot. Very good. So bye bye, friends. Please like my channel and like this particular video. Have a nice day.